Hello dear children, as you can see it on the screen, today we are going to start this video with the chapter number 8 of class 12 chemistry, that is D and F block elements. So let us first go through that what is the weightage of this chapter. First of all, see, the maximum weightage will come from the general properties of transition element. Then very short answer type question, that is VSA questions, lanthanide actinides में से आ सकता है. दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपका जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस जिसमें डीडी ट्रांजिशन, लैंथेनाइड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एमटीडी ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक नेचर, अनपेड इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में आपको रीजनिंग देनी पड़ेगी. तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के लिए, you have to strictly word by word, line by line focus on your NCERT textbook. So without wasting much of your time, let us begin with this chapter. So now this D block elements. So if we refer to the periodic table, so we'll find the elements which lie in between S and P block in the long form of periodic table, that is from group 3 to 12, are called as transition elements. Also, these elements have their properties which are intermediate between those of S and P block elements. So, they are metallic in nature. That's why they are known as transition metal. These elements are also called as D block elements, since in them 3D, 4D, 5D, 6D subshells are incomplete and the last electron enters in n-1 d orbital. A word is written penultimate. Penultimate means last but one shell. So, the general electronic configuration of D block element is n-1 d 1 to 10, ns 0 to 2, where n is the outermost shell. So if we further see the D block elements, we can classify them in 4 main transition series. And this 4 main transition series of elements corresponds to filling of 3D, 4D, 5D, 6D sub-level in 4th, 5th, 6th and 7th period. Means हम transition series को 4 series में divide करते हैं. That is first transition series, which is known as 3D series, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper and zinc. Second transition series is your 4D series. Third transition series has lanthanum, which are lanthanides written separately. It starts from hafnium. Fourth transition series or 6D series, which fills 6D subshell, starts with actinium followed by elements with atomic number 104 onwards. So now these D block elements, or now how they are known as transition elements. If you see here in the screen the example of copper. Strictly speaking, transition elements are those elements which have partially filled n-1 d subshell in their elementary state. See, D block elements are those elements where the last electron is filled in d orbital. Transition elements are those elements which have partially filled d subshell. Partially filled means adhure, incomplete. Incomplete means d orbitals are having 5 orbitals. So all the 5 are not filled. That means there are no 10 electrons, less than 10. See, if you see this copper, electronic configuration of copper, if one s electron is gone, that means Cu plus ion,
we have 3d10. If this ion this cuprous ion Cu plus becomes cupric ion Cu plus 2, then the configuration becomes 3d9. That means the element is not having 10 electrons. It is not complete. It is having incomplete or partially filled. So these elements whose atom in ground state or ion means ionic form or in ground state, oxidation state has incomplete d subshell, then they are known as transition elements. Means see, d block element means लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबशेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में, पर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होगा, पार्शियली फिल्ड डी सबशेल. अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के होते हैं, बट सभी डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं होते. तो जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, पर ये प्लेस किए गए हुए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में. क्यों? क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट से सिमिलर है. नाउ कम्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. दिस till this it was the introductory part. Now the general trends in the properties of transition elements. Atomic radii. The atomic radii of transition elements lies in between those of S and P block elements. So generally the atomic radii जो D block element का होता है, अपनी ही सीरीज में डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर के हिसाब से. तो कैसे होता है? इन द बिगनिंग, शुरुआत में एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर. क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो शील्डिंग इफेक्ट है वो घट रही है. डी इलेक्ट्रॉन स्प्रेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट में शील्ड कर जाते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इज स्मॉल. पर मिडवे, बीच में सीरीज के, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है लास्ट बट वन, मतलब पेनल्टीमेट शेल में. तो डी इलेक्ट्रॉन में शील्ड हुई, स्क्रीन हुआ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. सो विद द इंक्रीज इन डी इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ी. भाई डी इलेक्ट्रॉन स्प्रेड हुआ तो स्क्रीन बढ़ गई, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गई. इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बढ़ ही रहा है. तो इस वजह से जो एटॉमिक रेडियस है वो कुछ टाइम तक तो सेम रहता है, पर सडनली इट इंक्रीजेस. मतलब देखिए, स्कैंडियम, इनमें एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज डिक्रीज हो रहा है, ओके, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से. पर जैसे जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वापस ऐड ऑन होते जाते हैं, तो डी तो बहुत बड़ा है, 5 ऑर्बिटल्स हैं डी में, इलेक्ट्रॉन वहीं ऐड हो रहा है, धीरे धीरे पेयरिंग हो रही है, तो साइज क्या है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाता, डी स्प्रेड नहीं हो पाता. पर जैसे यहाँ आते आते धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं, डी क्या है, स्प्रेड हो रहा है, और साइज भी उसका स्प्रेड हो रहा है. क्लियर है? दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. Next, metallic character. So, except mercury, all transition elements have metallic character. This metallic character property is due to the low ionization energy. Why low ionization energy? Because they have 1 or 2 electron in the outermost shell, means ns1 ns2. तो as a result क्या होता है, metallic bond form हो जाता है. Hence they behave as metals. But the unpaired d electron, this also helps in the formation of metallic bond. So both you can say ns and n-1 d electron participate in metallic bond formation. So more the number of unpaired electron, stronger will be the metallic bond. So what is the main reason for metallic character? Unpaired electron. Oxidation state. This is one of the very famous and important trend or character of transition elements. Oxidation state. All transition element except the first and the last member of the series
exhibit number of oxidation states. Here you can see the series. Here you can see both in first and the second series variable oxidation state of one element, means each element is having variable oxidation state. The reason for the variable oxidation state is because of two different sets of orbital which the transition elements have. That is n-1 d orbital and ns orbital. और इन दोनों ही ऑर्बिटल में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत लेस या नेग्लिजिबल होता है, इसलिए दे आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन. मीन्स बोथ एनर्जी लेवल आर लेस, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसी वजह से उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. नेक्स्ट इज द कैटालिटिक प्रॉपर्टी. Catalytic property is also very famous property, and this is due to the presence of unpaired electron in the incomplete d orbital, and hence they possess the capacity to absorb and emit wide range of energies. In some transition elements, because of variable oxidation state also, they have catalytic and intermediate formation property. Famous catalysts used amongst transition elements are vanadium in the manufacture of H2SO4 by contact process, platinum in the manufacture of H2SO4 by contact process, iron in Haber's process, molybdenum is used as a promoter in same Haber's process, cobalt is used in Fischer-Tropsch process in the synthesis of gasoline or petrol. Nickel is used in hydrogenation of oils and fats, etc. Now, colored ion formation. Most of the transition metal compounds, whether ionic as well as covalent, are colored, both in solid state and in aqueous solution. Now, how this colored formation takes place? See, the major reason is due to the presence of incomplete d subshell. Now how? See, this is your d orbital, and the d orbital, the moment in the ground state, if it gets energy, see, energy or light, it gets energy, it will get split up. दो में split हुआ. अब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इसको लाइट या एनर्जी मिलेगी और ये गेन करके एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा. क्लियर? अब ये गेन करके जब एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इमिट करेगा. और हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है, अगर किसी वाइट लाइट ने येलो लाइट इमिट की तो वो सब्सटेंस हमें कैसा दिखेगा, येलो. That means this transition of electron from one d orbital to another d orbital is known as dd transition, which is important for color showing in transition element. तो जो d orbital है वो दो सेट में टूटा. ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जाते टाइम कोई एनर्जी या लाइट किसी ने ली और एक्स्ट्रा लाइट या एक्स्ट्रा एनर्जी इमिट की, वो लाइट का अगर कलर होता है तो वो कंपाउंड क्या है, हमें कलर दिखा रहा है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक बिहेवियर. नाउ मैग्नेटिक बिहेवियर. ट्रांजिशन एलिमेंट्स they contain unpaired electron in the n-1 d orbital. So most of the transition metal ion and their compounds are paramagnetic. So as the number of unpaired electron increases, the magnetic moment and the paramagnetic character also increases. Those transition elements which have paired electron are diamagnetic. वैसे भी हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. तो डायमैग्नेटिक is paired, paramagnetic is unpaired. Now see, magnetic moment is calculated from this spin only formula. This is that spin only formula. इस formula से हम निकालते हैं. Okay, so this spin only formula where n is the number of unpaired electron. Clear? Suppose you take the example of magnesium. It has the electronic configuration 3d5 4s2.
S में 2 है, पेयर्ड है, अनपेयर्ड कितने हैं 5, 3D 5, तो N की जगह आप 5 रख लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी वैल्यू इस तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स of transition element. Apart from them, few more small characteristics are like complex formation, interstitial compounds and alloy formation. So why complex is formed? complex कैसे बनता है? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत इजीली लिंक्ड हो जाते हैं, इनके साइज छोटे होते हैं तो इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, प्लस इनमें वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसलिए बनता है, इंटरस्टिशियल मीन्स कि कहीं भी बीच में ट्रैप हो जाते हैं, कोई भी चीज़ बीच में ट्रैप कैसे होगी? ड्यू टू स्मॉल साइज। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एलॉयज, जैसे ब्रास में क्या होता है कॉपर और जिंक, ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन, ये सभी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। फेरस और एलॉय, कॉमनली यूज्ड एलॉय इज फेरस एलॉय। तो एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ 2 or more metals. Clear? So how can you mix metals? If they have small size, small atomic radii, then they can easily get trapped in between the metals. So alloy is formed. So complex formation, interstitial, alloy formation, they all have similar reasons, especially small size of transition metal or metal ion. So this was all about the general trends of transition element. Hope you have enjoyed this video, you have understood the concept. Please continue watching the videos, learn the concept, read your books, reference books. I hope you have enjoyed this topic. Thank you and have a nice day.